आपका लेके जाए। सामान्यतः वी आर फोकसिंग, इफ वी इन्वाइटेड आइदर वी परफॉर्म, हमारे यहां हम भगवान की पूजा करते हैं और अंत में जहां तक जो इस सनातनी पर विश्वास रखते हैं वो आरती परफॉर्म करते हैं। आरती सामान्यतः मेरे द्वारा अनुभव है कि अभी तक हमें यही मालूम है कि भगवान के आगे जाना है और थाली को ऐसे से हिलाना है। क्या यू टेक केयर ऑफ, आई मेक यू को-होस्ट। हमें ऐसे दोनों को हिलाना है, हाथों को सामान्यतः। लेकिन आज मैं बड़े प्राउडली आप लोगों के बीच में बता रहा हूं कि वी कैन एक्टिवेट our 3 chakra with the perform right way to the Aarti. How perform? Just wait for a few minutes, more participant can be benefited. But that's very true. Initial side, when ancient time, when Aarti concept start. Today I spoke with the Krishna ji. He said, Guruji, in the ancient time, there was no light. So in the darkness time, we just show the God statue to everyone. हम उस प्रभु की मूर्ति दिखाते थे आरती के माध्यम से सभी को, ऐसा करते करते वह परंपरा बन गई। कहीं ना कहीं मैंने भी उसको अपने आप से कनेक्ट करा कि वहां पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो दीपक दिखाने के लिए भगवान को ऊपर से नीचे तक दिखाते थे। वह परंपरा आगे बड़ी 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 बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार लाइट भी आ गई, उसके बाद आ गई। मैंने आपसे शेयर किया था कि पत्रिका जब देखी जाती थी, जब लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देता था, ग्रहों के माध्यम से कैसी जोड़ी रहेगी उसका सुधार देख लेते थे। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी है, कहानियां, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अपने इसके माध्यम से कि नाउ विद द एवरीबॉडी इज डूइंग द आरती, हर व्यक्ति अपने घर पर आरती कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ आरती व्हाट यू कैन डू। सो अभी तक आप जो भी करता है आरती, तो पहले तो मैं आप लोगों के विचार जाऊंगा कि आप लोग जब आरती करते हैं तब आप कुछ विशेष चीज का पालन करते हैं या वैसे होता है हाथ उठाने? एनीबॉडी कैन से? भारती, जस्ट आई वांट टू नो फर्स्ट। प्रणाम गुरुजी। मैं वैसे आरती अभी आजकल एक जगह पे ही रखती हूँ और फिर जो आरती करती हूँ तो उसकी जो वर्डिंग्स रहती है उसको अपने अंदर ध्यान में लेकर के जाती हूँ। आप कुछ भी करें, मैं बताऊं आपके हाथों की पोजीशन को क्या रखते हैं आप? मैं आरती को वहीं रख देती हूँ और ताली बजाती हूँ आजकल। ठीक है, मतलब आप आरती करते ही नहीं है, भाव आरती है। एनीबॉडी मोर? पूनम, आर यू हियर? नो। धीरज, पूनम बोलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा बोल। जी, हम जब नॉर्मल जैसे सुबह शाम जो घर में दिया जलाते हैं तब हम उठाकर आरती नहीं करते, हम सिर्फ दीपक प्रज्वलित करते हैं। आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई पूजन पाठ करते हैं उसके बाद ही आरती होती है। आरती तो हर घर रोज की तो किसी घर में नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूँ आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद अगर आप उस साधना आरती करते हैं घर में, गणेश की आरती हो, लक्ष्मी की आरती हो, हाउ यू डू इट? वो गुरुजी जैसे घर में कभी कुछ जैसे भजन का अगर आयोजन करें तो फिर वो जो आखिर में आरती की जाती है फिर वो जैसे क्लॉकवाइज करते हैं वो। अच्छा, यू आर मूविंग द हैंड क्लॉकवाइज, ठीक है? यस यस यस। एनीबॉडी वांट टू से? धीरज। जी प्रणाम गुरुजी। आजकल गणेश चतुर्थी में गणेश जी स्थापित किए हुए हैं घर पे, तो जैसे हर सुबह शाम राइट हैंड से फैमिली के साथ आरती करते हैं क्लॉकवाइज। तो वेरी गुड, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अलोंग विद द फैमिली वी परफॉर्म द आरती, वेरी गुड। हाँ भारती बोल।
जब वैसे करते तो ऐसे पूरा ले जा करके 3 बार नीचे ऐसे करते और फिर लेके जाते थे, वो भी करते ये आपको पहले बोलना था। थे। चलो ठीक है। Anybody want to edit something more? Rupa, just Nairobi will you benefited with that question. Unmute yourself. I've seen when we do it from the bottom 2-3 times. We do it from the bottom, yeah, and then we took it and rotate it from clockwise. Very good. Anybody more want to say? Now Krishnan ji here. आप पूनम बोल बेटा। गुरुजी जैसे कभी जब कोई स्पेसिफिक इवेंट पे करते हैं ना, तो मुझे ऐसे याद है कि जैसे हमने बड़ों को करते देखा है, तो लेफ्ट हैंड में वो बेल ले लेते थे और फिर जैसे दाएं हाथ से आरती करते थे 3 टाइम्स नीचे, फिर ऐसे घुमा के, फिर 3 टाइम्स ऐसे करके, पर हम तो अभी सीधी सीधी करते हैं। चलो बेटा। Krishnan ji, just I spoke about you. Today's session, how to perform Aarti, blessings. Unmute yourself. Namaskaram, Guru. I spoke in the I told in the session whatever I talked with you regarding the Aarti. Okay. Now you say, just we want, because you are a main priest, you know the meaning of Aarti especially. Yes, I want you enlighten us what the meaning of Aarti, why you perform. Yes. Okay. Namaskaram, Guruji. Everybody to TA, everybody in the DH family, hi. So according to me, Guruji, the Aarti originated from ancient times. And obviously, if you look at the temples, the Garbhagraham or the Sanctum Sanctorum is very deep inside the temple. And people are never near the murtis. They are always, outside from a great distance. So when the main reason the Aarti was performed was to show different parts of the deities, deity's face, deity's hands, the entire body, and finally the padam of the Lord. So that was the main reason, as I understand. Aarti was done to show the alankaram and the divinity of God and his various parts of the body, so that people can get involved in seeing the how God was adorned in beautiful jewels. And as Poonamji mentioned, the practice is also to ring the bell on the left hand and then do the Aarti on the right hand. That's what the priests used to do. And scientifically, the main reason, again, per my understanding, is that the bell is used to bring the concentration of the devotees to the God. Because when people come to temple, people are thinking about their own problems. They are thinking, oh, I'm undergoing this issue. God, let me solve this so that my life will become beautiful, right? So people, the devotees are not really thinking about God and thinking about and getting dissolved in love and affection for the God. So the main reason for ringing the bell is to to get the mind and the soul for the devotee to concentrate. जा देखिए उसको, कोई बात Please unmute yourself. नहीं खाएगा। Please unmute yourself. Please mute yourself. Yes, carry on. So yeah, so that's the second reason, Guruji. The other reason that we talked about is there are two. So lamp is always lit with oil and ghee, right? The clarified butter. And even if you look at it in the Dharma Shastras, it's mentioned that it's always better to use ghee. And if you use oil, you have to use the sesame oil or the gingerly oil that they say, right? From till seeds. The reason is when you burn the wick that is in the till oil, it gives out sattvic powers. If you use other oils, like I don't know, I mean, in stores you get all the dhoop oils, some things like that, but diya oils. But if you light those lamps with that oil, it emanates rajasic
tendencies, but till oil and ghee is the most powerful substance which emanates sattvic qualities. So obviously, when we are near God, we want to be sattvic. We have to have sattvic tendencies rather than having rajasvic tendencies. So that's one of the main reasons. Scientifically, it's also proven that the the vapors or the smoke that emanates from ghee while doing the aarti, when it goes inside the body, it actually clarifies the body. So that's why, when you do it, it is actually said that you have to do it clockwise 3 times, so that it is to purify your body, to purify your mind, and to attain salvation. Very good. So that's what I understand. Very good, Krishna. Very beautiful is something you are more you clear us. ये हमको सब प्लास्टिक के बैग देना भाई, अच्छे से गिफ्ट देगा। उसके पास है ना वो ये उसका। कंचन म्यूट करो बेटा अपने को, बात मत करो, प्लीज म्यूट करो अपने आप को। If you want to talk, you can talk, but subject to mute yourself. So just I am going to say thank you कृष्ण जी, आपने बताया मुझे, सबको बताया कि आरती वाकई कहीं ना कहीं हम टोटली कुछ इसको माने कि पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो भगवान का चेहरा दिखाने के लिए, पूरा श्रृंगार दिखाने के लिए, लाइट स्पोक अलंकार दिखाने के लिए हम लोग ये कार्य करते थे। बट मेरा जो ध्यान है, मैं यही नहीं चाहता कि कोई प्रथा चल रही है अच्छी, उस प्रथा के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में आरती कैसे करें। मुझे आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, थाली हो जाए, हम बच्चों को भी खड़ा करके देखें, हमको ही नहीं मालूम कि इस आरती का मतलब क्या है। हम यूं कर लेते हैं, आरती ले लो बेटा, वो पहले भगवान को दे देता, आपको ले देता। ऑल 3 थिंग्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट, आप कोई भी कंटेंट, यू यूज वॉट एवर यू वॉन्ट, यू यूज घी तेल एज पर यूर कस्टम, बट वेन यू टेक द आरती थाल, आरती प्लेट इन योर बोथ हैंड, that is priest that you can use the one hand bell and all, use the both hand and just see the God face, assume on your own body also. First time I am, maybe possible, is up to you, you want to change it, your pattern not, but as per me, if you respect me as a guru, that's why there's only 12% are here, because they don't, nobody want to take any different knowledge. But when the time comes, I am sure 1000% the pattern of the aarti, when no, because nobody know it. Even our elders are not teach us ki aarti do like this. We just purana chala aa raha, pratha chali hai. We can activate our chakra with the help of our aarti. To whom we are offering light, उस प्रभु को दिखा रहा हूं जो आपकी आरती करता रहो सुबह से लेकर शाम तक, आपके शरीर की आरती उतारता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। सूर्य भगवान आपकी आरती उतारते हैं। ये तो हम हमारा ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, हे भगवान लाइट दिखाकर। लाइट नहीं, लाइट उनको नहीं दिखाना है, वो बाकी जिनको लाइट नहीं दिखती थी उनको दिखाते थे पहले के टाइम में, लेकिन आज वह लाइट हमारे अंदर की जोत जले। ये आरती की जोत से अंदर की जोत जले। कैसे जले, ये तरीका आज आपके सामने मिला रहा हूं। सर्वप्रथम जब भी आप अपनी आरती का थाल ले, फर्स्ट आई एक्सप्लेन इन हिंदी, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। कीप लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने हूं, द थिंग द आरती थाल इज हियर। बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आई, कीप द प्लेट अप टू योर थर्ड आई, मे बी पॉसिबल up to the God, make a balance and bring clockwise up to your heart chakra. Heart chakra, you extend the heart chakra again, you bring your aarti like this and again back from heart chakra to navel chakra, right? Om Jaya Jagadish. With the help of you feel the picture of Om is becoming, developing automatically. When we do like this,
this, automatically you will feel the Om is becoming a picture. When you do like this, and maybe possible 3 times you can take, and in the crowd, whenever you give offer to someone else, 3 times do it. Brahma, Vishnu, Mahesh. आगे सामने नहीं रखना, ये सामने. मैंने खुद ने देखा, I saw from my people use का, जब बच्चों को झूला झुलाते हैं वैसे करके चल देते हैं. कुछ आते हैं, you do with the discipline. You cannot feel that you put up in the Shastra. भगवान को प्रकाश क्या दिखाओगे तुम यार, जो आपकी लाइफ को दिखा रहा है. तो इंग्लिश आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. Whenever you perform any aarti, keep your plate like this and cross your third eyes along with the focus on God face. Feel even in the God statue Lord Ganesha, there is a head, there is a chest, there is a navel area. Make a balance, and from your third eyes, cross upper third eyes and just toward heart chakra, again back from toward heart chakra to keep on navel chakra. It become Om. You see the picture. Don't keep it straight. Jhanai, don't keep it straight like this. You just keep it straight, then move like this. Third eye, right, Guruji? From third eye. From chest to third eye. Like, not for big round, not small round. कई लोग आरती करते हैं, मैंने देखता हूँ यूं कर देते यूं. You say how 1%, but now it's a responsibility. Please, nobody know. Even biggest priest not expect to do आरती like this. कर रहे हैं, चले आ रहे हैं. आरती आकर आरती को लेना है, कुछ रुपए डालना है, ये हमें मालूम है. कोई आया आरती ले लो, आरती ले ली, 10 रुपए डाल दी बस. अरे you are connected with the divine light. Absorb that. But still we are not ignoring, just become a one flowing water. And हमारा जैसा श्वास है वैसे ही पानी जैसा बह जा रहा है. जिसने बोला वो कर लिया. मैं क्यों करूं ऐसा? आप इसलिए करें परफॉर्म आरती, your all 3 chakras become activated with the divine light, with the third eye. Clear? Now little explain in the English. Keep the plate, cross your third eyes, focus on the front statue side, cross your heart chakra, again back to the heart chakra, cross your navel chakra, again third eyes. You feel the Om picture will come out. At least 3 times you have to do it. After 3 times, you can offer someone else. If the family member are less, you can do your own. अगर आप 2 जने, me and my missus both do, that time I don't keep on any type of counting foundation. But when we are in the crowd, when we are in the temple, you just immediately switch 3 times and do like this. Okay. Now, anybody want to ask? कुछ पूछना चाहोगे? Rupa, you want to ask something? Unmute yourself. Rupa ji, unmute yourself. Oh, sorry. I wanted to see the pattern. You do it once. No. then- Just I'm showing the pattern again and again. We are saving to the God. For example, Yes. Yes. The Atano Basu display is the Lord Shiva picture. You see everybody. Uh-huh. You know, we are just performing the Aarti, Lord Shiva picture. We just focus on the Shiva's third eyes, right? Keep like this and make a balance between third eyes to your third eyes, chest to chest, navel to navel. You just assume all pictures are inside with you. Agar Lord Shiva want to take the work from you, they will use your body. They won't come on this planet. So you have to do it 3 times. Three times minimum 3 times. If time allow, if you have your time, you can do how much 3 times in one place or 3 times? 3 times. Well, 3 times you have to make Om picture during the Aarti. Okay. Om picture means Om Jai Jai Ganesh. For example, Ganesh, Shiva, you Shiva.
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh. You just feel your both hands are making Om with the combination of Brahma, Vishnu, Mahesh. Clear? Okay. Clear? I think it is a just got a vibration. What I said got something vibration. You just guide the people to do आरती like this. And that time I was also thinking how to do यार, कैसे करेंगे यार, कैसे करते, जिसको देखो यार अलग ढंग से कर रहा है. तो एक वन थिंग, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए आपके आरती. वो मेरे को लोगों से मतलब डोंट बिकम एंग्री, ही डोंट नो हाउ टू डू आरती. You just take your responsibility first. Whenever you got an opportunity, do like this along with a smile. Whenever you do the Om, make the picture Om with the light. गुरु जी मैं एक बार आप जो बोल रहे हो एक बार स्क्रीन शेयर करो. मैं एक बार जस्ट पेन में और ड्रॉ किया. हाँ बोलो. एक सेकंड, एक बार आप मुझको ये स्क्रीन शेयर करने के लिए दीजिए. हाँ कब कर रहा हूँ. Yeah, I'll make you co-host. Yeah, you're co-host. हाँ दिखाई दे रहा है. हाँ. सबको दिखाई दे रहा है. This is Brahma, this is Vishnu, this is Mahesh, and it is connected with third eye. One is third eye. This is third eye. This one is your Vishnu, and this one is your Mahesh, the navel chakra. Now this is connected. Wherever the deity is, this is connected with that. If there is an idol and a deity, so you connect with that deity, concentrate on that. Then and along with that you do this kind of arti. So it will activate your Brahma, Vishnu, and Mahesh. This is the You have diagram. the track, Basuji. It's Mahesh and then Brahma. This is Brahma, this is V, Vishnu, and this is Mahesh. No, top is Mahesh, right? We are beginning. Yeah, from- yeah. Sorry. Sorry. This is Mahesh. This is Mahesh, and this is Brahma. It is third eye. Hard enough. Whenever you do, very good, Basu, very good. I just missed it. Very fast I did, na. That's why I missed it. That I appreciate you. Very fast you took the action. So this is connected with the triangle kind of. This is a very good concept Guruji is telling. This is also connected with a triangle kind of energies forming over. If you do a diagram, this is a triangle. This formation is happening within your body, within your chakras, and within the deity kind of thing, which is you are concentrating on. Very good. Very good. So Guruji, finally, I have one question. Finally, when we are done with this, कुछ लोगों का वो प्रैक्टिस है कि जैसे आपने कहा वो भगवान को दिखाते हैं ना 3 बार, वो करना है क्या? सब खत्म, ये 3 बार ओम करने के बाद. भगवान को लाइट आप क्यों दिखाते हैं? ये तो जब लाइट नहीं थी तब अपने कमरे में भगवान को, जो इस पर कृष्ण स्पोक बताया, जब लाइट नहीं थी जब करना. हम भगवान को लाइट क्या दिखाएंगे? हम तो ये आरती आप लेके खड़े रहो, कुछ नहीं. But when you do perform आरती, that time if you are comfortable, then you make Om 3 times along with the Brahma, Vishnu, Mahesh. And after that, whatever you do, you can do. You can keep the 5 minutes, 10 minutes standing mode. You can. It's up to you. How much you are conscious. But whenever I ask a lot of people also connected with me, they don't know how to perform aarti. Just understand aarti. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, Deva, Mata Jai, jaldi aap. No emotions involved. Very few are connected with the aarti. Jai Ganesh, just focus on your third eye, focus on your heart chakra. Jai Ganesh Deva, Mata Jaki Parvat. वही स्माइल, वही खुशी आपके चेहरे पे भी होना. भगवान जय गणेश, जय रोत ले गुस्सा चेहरा करके कर रहे हो तो भगवान को क्या कर रहे हो? मत करो इससे अच्छा यार. You keep smile and joyness with you. और मेरी पीड़ा है, मेरी तकलीफ है, जय गणेश, हाँ? मत करो. Don't do it. Don't show crying face to the God. Along with a smile, oh my God, you are making aarti. Whenever we a ritual in our Hindu culture, when the दुल्हन घर में आती है, when our groom become on the horse, we perform aarti like this, so happily. And to seeing happy, somebody donating the money in that chant. So from today onward, whenever we go for aarti, I am taking the responsibility only you. Maybe possible those will take the video, they can use it.
आप जब भी आरती करेंगे हमारे शरीर को पूर्ण ईश्वर का समान मानेंगे, आपके ब्रह्मा को दर्शन कराएंगे, आपके विष्णु को दर्शन कराएंगे, आपके महेश को दर्शन कराएंगे। एक बार पुनः देख ले मुझको। देन वी गो फॉर ये, मैं आप सिटिंग मोड में, आप उस टाइम स्टैंडिंग मोड में होंगे। मूर्ति अगर छोटी हो तो उसके आगे पीछे नहीं घुमाना, आपको तो पूरा घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके भी थर्ड आई के ऊपर से जाते हुए, हार्ट चक्र से होते हुए घूमते हुए, फिर नेवल चक्र से ऊपर आते हुए, फिर थर्ड आई से। ब्रह्मा विष्णु महेश कॉम्बिनेशन परफॉर्म ओम इन द आरती is the same meaning of Om. In the deity in the front of you, offer the blessings, one Brahma, one Vishnu, one Shiva. प्रणाम भैया, एंटी क्लॉकवाइज करना है क्लॉकवाइज करना है? बेटा, how you can make a Om clockwise or anti-clockwise? क्लॉकवाइज। आप कल्पना करें ओम बनेगा तो कैसे बनेगा? वो क्लॉकवाइज से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन अंजू। ऐसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा है? कैसे? Clockwise. क्लॉकवाइज बनेगा ना। आप ऐसा घुमाओगे तो ओम ऐसा थोड़ी दिखेगा। अच्छा हाँ, भगवान जी को तो ऐसे ही करोगे। हाँ ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सॉरी भैया, गॉट इट। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बेटा, तेरा प्रश्न था। तो हम आज से जब भी whenever we go for any perform any आरती, do like this. It was my real pain and I got it. और आपको देखेंगे और ये घर के लोगों को ही बताओ, प्रथा ऐसे ही बदलेगी। अब आप पहली बात तो आप खुद एंजॉय करना है, लोग आरती कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। मत करो यार। मैं आई नेवर डू परफॉर्म आरती whenever the lot of crowd there I standing in the morning. ओके, आपका हो गया, मैं क्या हो गया? आप आरती करोगे उसके पहले दूसरा छीन लेगा आपसे, तो इसलिए डोंट गो इधर। मैं ओके, और आप तो आरती करी गुरुजी? हाँ कर ली मैंने। पहले तो या तो मुझसे पहले ही करा लेते हैं, अगर मैं थर्ड पर्सन मंगे जाता हूँ तो आई डोंट इन्वॉल्व इन दैट, आई गिव द चांस टू अदर्स। आरती लेने के लिए सब भागा दौड़े हो गया। आरती तो ऐसी चीज है, और हम इतने भय भीरू हैं, इतने डरपोक है कि आरती नहीं ली तो भगवान कहीं हमारे काम तो नहीं रोक देगा, कोई पाप तो नहीं दे देगा। ओ इधर लो, इधर लो, इधर लो। और क्या है यार ये? आपके समर्पण डिवोशन में इतना पावर हैगा, तो आरती को देख के आपने नमस्कार कर दिया तो आपकी आरती ज्यादा पावरफुल होगी। एंड वी जस्ट वांट टू don't want to take the आरती, just want to put up the money. हमें बता दिया क्यों डालते हैं पैसा थाली में, आरती में क्यों डालते हैं पैसा। एनीवे, बात लॉजिक बड़ा हो जाएगा, हम कहीं और रखेंगे सेशन। तो इट इज माय, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आरती, एंड थैंक्स कृष्ण जी, यू आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दैट। आज से हम सब लोग, अगर आपका मन अलाउ करेगा तो आप इस प्रकार से आरती करें और ओम का दर्शन भगवान को कराएं। Okay, good. Now we are going for today. We organize our divine storytelling session. It was a beautiful session, and because मैं ये मानता हूँ कि there is a percentage. हाँ जय जी, रूपा जी बोले आप। Guruji, are you going to start doing the Shraddh like you did last year? अभी there's a lot of time. There's a lot of time. It's still 4-5 days. I will give the intimation of the Pitrapaksh when Pitrapaksh is coming and all. It's still 4-5 days. You're talking about ancestors, is it? 20th. I thought it's from the 20th. So it's lot of, because we will come on there. I will send, because I am not in that energy. Whenever the Anant Chaturdashi finishes, before a day I got energy, and I will share along the ritual and all. Everybody, Patra Tarpan, Dhyan, whatever I invented, we do it. Okay? Thank you. Just try to get you. So now, yes, Krishnan ji. I have one question, Guruji. So after the end of the Aarti, right, what we do is we give the Aarti to Bhagavan and also we take Aarti. I can understand why we take Aarti and then keep it in our eyes, but any reason why we give it to Bhagavan? That is my main intent. Do you know it? I don't know it, Guruji. That's why. मतलब that is the it one तेरा तुझको अर्पण।
God is first. First you give the God. In the front of God, you are seeing the God, you are taking first. No. First, give the God. The giving, first give, then take. One definition from your question. पहले आप देना सीखे तभी लेना सीखें. But the reason why we take Aarti and then keep it in our eyes Because is to purify our body. Soul. That is different thing. I'll go. Whatever hotness in the eyes, the instant said people nowadays people are not focusing too much that head. Keep the on the artist. They keep her on the head side thing. Three side you have to put up your head. As per old books are. You just take the arti. You touch, yes. You correct. Whenever you take the arti na, like this, up put up Brahma, Vishnu, Mahesh. Normally we go and close the mouth. No. We just take the arti, first give to God, arti to God, and when take the arti, put up hand on the side. Activate the Brahma, Vishnu, Mahesh. But it is become only on the theoretical. It's not applying on the practical. I try to convert it to the practical, and very good question you asked, Krishnanji. When you take arti to the God, and after offering to the God, and when we take, for example, why we take prasad, offer God, why we not take first? First we nevedya offer to the God. You know it very more better than me. First we offer. That's why always offer first. It's just a gratitude. He's in within you. Got it. The reason why I asked Guruji is because God already has chakras activated, right? So it's not for him to activate the chakras. That's why I asked the question. But I know. I appreciate your question. Maybe possible. Skip. Nobody asked me how to take the arti. First we give to God, then we take the. So like same like नैवेद्य, हम पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं. इसी प्रकार कोई भी कार्य हम किसी और को दे, हम इवन खाना खाते हैं तो पहला खाना निकाल के गया के लिए निकालते हैं. All is connected. We never put up for that. Yes, no, but now in the dining table, dinner culture, nobody, everybody forget it. If you are on the dining table, if you are in the Western group, if you want to take the food, you are unable to put over, just keep the eye closed, think about your deity, that you are offering the food and eat it. Ultimately, you offer the God, ultimately you take it. आप कभी आपका भगवान नहीं खाते, आप कहते, you just, whenever you take the food, just think about your deity, whatever you follow, and then take the food. Clear? Okay, good. Okay, now, like Rupa said, Shad Paksh is coming. The Shad Paksh will do some type of remedy, but I am trying. Tomorrow there is a Bhasma Yoga session, 10:30. Anybody, 1%, 2% want to join, they can join and they can become of that. Okay, and number 3. After performing the Aarti, you keep sit on a place. अगर आप कहीं पर भी आरती के लिए जाते हैं, आरती पूरी हो जाए, किसी भी एक स्थान पर बैठ जाए और एक बार आंख बंद करके just close your eyes, sit in a proper place and just count the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then leave the place. You know, normally whenever we complete our worship, our priests say, like Krishnanji know it, offer some water on the floor, and floor water you touch to your forehead. Why? Because if you not take it, your whole worship will be taken by the devils. अगर आपने कोई भी पूजा करने के बाद वहां पर जल डालकर जल का पानी आपने नहीं लगाया अपने सर पर, तो वह आपकी पूजा डेविल्स के पास जाएगी. Yes, Krishna ji, am I right? Are you able to understand what I want to say? Yes, Guruji. Yes.
And I didn't know the part that to be taken by the devils, but I did know the part that you have to do that. Yes. Always, whenever you do any work, put up the fine word. Yes. गुरुजी ये भी कहते हैं ना कि जमीन पे बैठ कर नहीं करनी चाहिए, कोई आसन पे करनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं पूजा लगती है। अरे बेटा, वो मैं आसन की बात तो कभी, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। आपको मैंने कहा कि हमेशा पूजा अपन करते हैं तो आसन पे बैठ के ही करेंगे अपन, तो पूजा पे अब विदाउट हम तो कराएगा नहीं। पंडित की बात करो, पंडित आपसे पूजा पे आसन पे करा के बिठाएगा, है ना। पंडित आपसे आखिरी में वो पानी डलवाता नीचे और कहता है इसको आंखों पे लगाओ। परिवार के दूसरे सदस्यों को हम देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हमारी डेवली चल जाए। इसी प्रकार कोई भी परपा आरती हो बेटा तो उस स्थान पर एक कुछ पल बैठो। ओके, and I am not saying whenever you do any yajna, whenever you perform any arti, abhishek, that time it's follow. It's not follow on that our small worship. But when we invited someone, वो showed us upchar totally. We offer to the sun, we offer to the planets, we offer to the mother power Shakti of that continuation. That time you do it. When we invite God, normal there is a process before it. कि सभी देवी देवताओं से आकर निवेदन है कि दे कम ऑन दिस रन। आह्वानयाम पूजयामि स्थापयामि, उनको आह्वान करते हैं, उनको पूजन करते हैं, उनको बिठाते हैं। बट बिफोर उनके जाने के पहले वो जल अपनी आंखों में लगाते हैं। पूजा आपकी कहीं कोई नहीं जाने वाली, लेकिन वो जल आपके लगाने में ये क्या होता है, ये फियर हमारे मन में कि ये होगा, तभी हम लोग करते हैं। क्लियर? नाउ गॉट इट? अंडरस्टैंड? हाँ भारती बोल बेटा। जब हम आरती कंप्लीट करते हैं तो उसके ऊपर पानी भी फिरा करके, वो प्रोसेस बेटा अलग है, वो शीतलीकरण अलग है। अब वो पूरी पूजा विधि नहीं बताऊंगा बेटा मैं। शीतलीकरण क्यों करना चाहिए या नहीं? जस्ट एक नहीं, वो तो आरती कंप्लीट करके आरती का शीतलीकरण तो होता ही है ना, कंपलसरी आरती का शीतलीकरण तो होता ही है। वो शीतलीकरण होने के बाद ही हम आरती लेते हैं बेटा। यस, है ना, वो शीतलीकरण होता है, वो आरती को हम ठंडा करते हैं, उसकी शीतलता कम करते हैं, वो शीतलीकरण करते हैं, उसका शीतलीकरण का मंत्र होता है। उसके बाद हम आरती पूरे, देन वी ऑफर पुष्पांजलि। Pushpanjali. I will explain the one lecture for the Pushpanjali. What the meaning? In the Pushpanjali, priest give the flower to everybody. When he start to say, "Hey, Ganda, Vigmay, Bhaktunda, Dhimai, Tanno, Danti, Prachodayat." कहता है कृष्णा विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हम सब खड़े रहते हैं, बोलते हैं। That I introduce one more technique here. Whenever you perform Pushpanjali, what you have to think? Okay, it's a Gayatri mantra. It's not in Ganesh Gayatri, Durga Gayatri, Shiv Gayatri, like my every mantra. The 24 Gayatri. Okay, now be in the meditative mode. Lord Ganesha is ready to go. है ना? They come along with, they take our moderation, worries, beget. But before dispatching Lord Ganesha from this bed, how much you took the responsibility? When Lord Ganesha came here or last year, they gave some responsibility to you. 10 days to watch you, what you did in the all 365 days. आप किस किस के जीवन के गणेश बने, किसके जीवन के विघ्नहर्ता बने, किस कुष्ठ रोगी को जाके मदद करी, किसको अंधे, ये आप माने 10 दिन आते हैं, हमारी तकलीफें दूर करने नहीं आते हैं, वो हमारे से परीक्षा लेने आते हैं कि तूने 10 दिनों में, एक साल भर में कितने लोगों के जीवन का गणेश बना, विघ्नहर्ता बना या विघ्नकर्ता बना. Okay, so whenever you go for further, you just take the commitment, the 10 days, and continue on the whole year. When the next Ganesh Utsav come, that time you talk with yourself. Okay, Ganesha never come on this planet. He always awaken your power. You do it, you become a troubleshooter for someone. किसी के विघ्नहर्ता बने. ठीक है? Clear? Okay. Now we are going for meditation, beautiful meditation, short meditation, because I am also become little bit hectic for me because the session I took it from 5:30 to 7:30 both. Oh my God, Titir. Pranam Guruji. Just give a small clap for Titir. Beautifully she conducted the session, and initially he start session before me,
and come and invited every people and participants, and everybody appreciate even after when I spoke my participants. Well, there's a good beautiful daughter from where she is. She is from Calcutta, and the young divine astro healer is with us. And I'm sure in the coming time, I say now my time is over. Now your time to take the responsibility, and whenever you need help from my side, I'm ready to give my help. Okay. And Titir, you just focus. How much what you say about your experience today? Before going. Today's Guruji, it was a different experience. It was How? a very different, because the meditation which you did, and there were the things which you told about the 12 months, 7 days, 7 weeks, that's that we had done in divine astro healing earlier also. But the lessons that you gave on Aarti, and the meditation that you gave on a single breath, and focusing on the exercise which actually you did, was a different from the last time. And it actually took the plane on a takeoff mode. अभी तक पूरी उड़ान नहीं ली है, लेकिन टेक ऑफ हो गई है. That's why I said it. Every session is a very different. I never use my same word in the same session. My every session is most of the session is attended by Jaya. Most of the session attended by Bharti. Bharti also come. But every time they're different. Even I change the process also sometimes. But overall, finally, nutshell is come on one point. Okay, so tomorrow again. So today, thank you very much, Beta Titir. Blessing to you from my side. You focus on your own and focus on the divine astro process also. You can get only present when you do it regularly. You can get a result only when you do it regularly. Before teaching, you have to do it regularly. In that case, your word have the power, teaching power. When you do the process, if you not keep doing the process and teaching, no use. Okay? Keep the both hand like this. Keep your window. My God. Beautiful face. Oh, good. Spine straight. Left hand, left nostril, left lungs. Along with inhaling, use left hand. Relax. Now, right hand. Now both hands. Relax. Keep the both hands on your knees. Become aware of navel area. Chant Om 100%, keeping attention on the navel area. Long deep breath. Om. Any physical health issue, focus on there.
All any physical pain in the body, कहीं भी कोई दर्द हो, तकलीफ हो शरीर में, ध्यान ले जाएं। Become aware of center point of chest. Chant Namah. Take a long deep breath, keeping attention on the chest area. Chant Namah. Any pain from relations. Keeping attention on your third eye. Chant Shiva. Take a long deep breath, लंबी गहरी श्वास भरें। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए शिवाय का उच्चारण करेंगे। शिवा। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी,
भी दिखे ना सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी। बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी दर्शन दो मन के नाथ, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे, दर्शन दो मन के नाथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। Become aware. Whenever you open your eyes, cover the water glass with right hand. पानी का ग्लास है। And drink the water through Shiva, Brahma, Vishnu. Third eyes, heart chakra, navel area. Now, thank you very much. Today, going to good news. There is one participant, Varsha Sharma, of our Divine Astro Healing. Her daughter is engaged today. She invited all the Divine Astro Healing family along with me. But due to my hectic reason, I'm unable to go. But we just all pray for our D8 member, Varsha Sharma, who's a daughter. Good life, peaceful life, prosperous life in married life. Okay? कल 10:30 बजे बस में योग. Anybody want to join? Anyone can join. अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. बोले कंचन जी. गुरुजी सॉरी, प्रणाम। गुरुजी आपने जो कहा था ना वो लिखने के लिए फ्रॉम लास्ट 3 days, तो अभी और लिखना है ना? तो उस पर द्रव रखने के बोला था आपने। आपने जो गणेश चतुर्थी पे हमने आपसे बात किया था। हाँ। गो ना विसर्जन अभी कंटिन्यू राइट। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अवेयर अबाउट इट। तो उस पे जो ध्रुव रखा था गुरुजी, तो वो ध्रुव अभी रहने दो ना उसमें। बेटा मैंने रहने देगा, अनंत चतुर्दशी पे बात करेंगे इस बारे में। अच्छा ठीक है गुरुजी, है ना बेटा? ओके। And just think how much Kanchan blessings, and I thought about leaving a very she and just join the session. आप में इतना पावर आएगा कि आप याद करोगे वो व्यक्ति आएगा. You just join her before half 15 minutes. I thought about you. I today Elevely I'm not saying Elevely. So because normally days, हाँ बोल बेटा. Unmute yourself. Yes. I did the process, Guruji, with you. No. What I'm saying you join session late little bit. No, I am there, but I am in little like worried and in tension. So I came to do the process like. Basically, I want to know, I think during my session time, you were not present that time. And when I closed, I thought about you and you were, after
after the session. Yes. Physical means I am in video, but like my mind is somewhere else. I'm not. I'm in tension. Okay, now. Yeah, but I did the process. I came and did. I did a meditation mode. Okay, blessings. So tomorrow join 10:30 Bhasma Yoga as per your own time. Okay, and next session will be on Saturday, and anybody want to join a Monday session 8:30, anybody can join it also. Because from my side, I'm not going to invite invitation. Every Monday, from Monday to Friday, I will come on the 8:30. I join. How many people? 1, 2, 3, 4. I will give some knowledge and do the meditation. Next Saturday, I will give my intimation to you. Okay. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, अपने साथ रहें. Blessings.